हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 236। इसमें हम आपको एक लोड सिस्टम लेके आए हैं जिसकी वजह से बीम जो हमारा दिया है ये भी 20 मीटर है, उसके 7.5 मीटर पर मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए सी पॉइंट आपका है, कोई सपोज करिए सी पॉइंट यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वी कैन ऑलवेज ड्रा दी शेयर फोर्स डायग्राम। आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, दिस विल बी सम वैल्यू ओवर हियर एंड सम वैल्यू विल बी इन दिस वे, दिस विल गो समथिंग लाइक दिस। सो ये आपका इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पर दिस इज योर BA and this is your BB. This is negative and this is your positive. This is your positive. So A to C will be your this portion, only this portion, because A to C shear force is equal to BB, and C to B their shear force will be positive BA. सो यहाँ पर आप देखोगे कि लोड का जो कंडीशन है वो आपका है W1 80 किलो न्यूटन है, W2 आपका सपोज करिए 220 किलो न्यूटन है, बाकी रेस्ट जो है आपके 100 है, W3 W4 W5 W6 दीज आर द 100 किलो न्यूटन, ये लोड है। तो यहाँ पर हमने जो पहले पिछले वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्मा W बाई L फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा WL 6y इक्वल टू 80 प्लस 220 प्लस 4 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 6 7 4 2 6 6 7 700 बाई 20 दैट इज 35 आ जाएगा। अब हमें लोड को इस तरह से प्लेस करना है, जैसे सपोज करिए कि हम WT को या W1 को बाहर करते हैं, दिस इज 2.5 मीटर, तो W1 अपान A जो होगा इक्वल्स टू आपका 80 अपान 2.5। 80 अपान 2.5 जो होगा वो आपका हो रहा है, दिस इज योर 80 अपॉन 2.5, दिस इज 32, ये 32 आ रहा है। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, 80 को यहाँ पर जो W2 है वो उसको हम C पे लगाएंगे और यहाँ ये ऑर्डिनेट जो हमारा आएगा वो 80 के करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, 80 के करस्पॉन्डेंस, और बाकी कॉरस्पॉन्डेंस के जो ऑर्डिनेट होंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप यहाँ डिस्टेंस देख लीजिए क्या क्या है, उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज 11.5 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट होगी इस पॉइंट पे, दिस इज 11.5, हमने C को यहाँ पुट किया है 2.5 पर, तो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू, दिस इज 7.5, दिस इज 2.5, so this is 5 meter, this is 5 meter. So we can find out this ordinate, that is your y upon this distance 5 equals to your VB means 1 unit divided by whole 20 you can say. So y equals to 5 by 20 1 by 4, that is 0.25. This is 0.25. Similarly you can find out this value. We can find out this value. If you put C over here, so we can find out this value. Just
we can find out from this point. This is your 1 by 20 and this is your 7.5 means equals to, this is your 7.5 means 12.5. This is 12.5. So your y will be 12.5 upon 20. So this is your 1.25 by 2.625. This is 0.625. This is 0.625. And what will be this value? This is your that is 7.5 y2 upon 7.5 equals to 1 upon 20. So y2 equals to 7.5 upon 20. So this will be your 0.75 by 2 y375. So this is your y2 is equal to 0.375. This is 0.375. Similarly, you can find out this value also. This value. This is your, this distance is 3 minus 3. So this is 3 meter. This is 10.5. So this is 9.5. This is 9.5. So 9.5 1 by 20. 9.5 120. So this will be your 0.475. This is your 0.475. 0.475. And what about this? This will be your, this is how much? This is 2 meter and 2.5 meter. So this is 7.5 10 12 तो 14.5. 14.5 means 3 14 6 5.5. So this will be 5.5 divided by 20. This is your 2.75. This is your 2.75. And this is your minus 2 3.5 upon 20. So this is 0.175. So this is 0.175. So by this you can always find out the ordinate. We need ordinate left hand side from C to A this way here and the right hand side in this way. यहाँ पर आप देखोगे W1 upon A is 32 and sigma W by L is equal to 35. So W upon A is less than W upon L. So this condition is okay. इस कंडीशन में आप काम कर सकते हो और ये इस कंडीशन के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो. तो this will be your, what will be the values? Values will be 80 into 0.375 minus plus this will be your 220 into 0.625. If it is put just right, 0.625, this is 0.625. This we are getting we are not taking that point, that minus point, because we are putting it just right. So this y2 is not taken in consideration. So this is 0.625 and for W3 is 100 plus 100 into this. How much is this? This value we have not found. This is your
7.5 plus 3, that is 10.5. So this distance is equals to 9.5. 9.5 upon 20 equal to 0.95 by 2. 2 चौको 8, 2 7 14, 0.475. 0.475. This is coming 0.475. 7 and 3, 10 equal, yes. And this is your 10.5, that is 9 point, this is your 0.475. 475. And this reduced by 2 to 7.5 upon 20. So 0.75 upon 2, 0.375. This is 0.375. 375, and if you reduce 2.5, we are getting perhaps a 0.275. This is your 2, means this is 7, 10.5, 12.5, 12 or 15, 5 upon 20, 0.25. So this is your 0.25. And this is 0.175. So multiply with 100 by 0.475 plus 100 multiply by 0.375 and plus 100 multiply by 0.25 plus 100 multiply by 0.175. This is your total shear force which you can calculate. This will be something like this. This is minus 80 means 0.220 into 0.625 plus 42.5 plus 37.5 plus 25 plus 17.5 without this much minus 80 into 0.375. This is coming 230. This is coming 230. This is coming 230 or something like that. You please check it. This is 230 or something like that. This will be like this. So you can calculate always by this demographic. And what will be the maximum negative if you put this thing, how you will put the loads, और maximum negative के लिए क्या करेंगे आप? Maximum negative के लिए हम लोग क्या करेंगे? This is maximum negative portion, so we can put load somewhere, this thing W3 2.5. if it goes here in the 7.5, this is 7.5, so 3 loads will come here in this direction, so this will be negative and this will be positive. So how to check this thing? You can calculate by putting negative values, maximum negative value this is what this is what we can calculate, so this is okay, we can go for this.